बात करते हैं। ये बेसिकली फिजिकल हेल्थ और रिलेटेड एक्टिविटीज का सेशन है। Like yesterday, we have seen lots of useful demonstration by Dr. Sundar Raji, Dr. Sushila Murthy, Commander Murthy, and their daughter, uh, along with Dr. Akhilesh Kumar and Dr. Kumar Swamiji. So we'll continue with the same session today. They are going to demonstrate very little but effective things which we can do at our home by using the ingredients which are easily available at home. So after this session, we'll have 1 hour break, and then at 9:30, we will start with our proficiency module. So 9:30 to 10:30, it will be a parallel session, Hindi channel Sanskrit and English channel, the language proficiency. At 12 o'clock, literature and literary activity. After that, we'll have 1 hour break. Between 2 to 3, we will continue our discussion and understanding more on Indian literature and literary activities. 3:15 to 4:15, the physical health and related activities, session number 2. And at the end of the day, 4:30 to 5:30, we would love to hear from you in the sharing session. Uh, in today's sharing session between 4:30 to 5:30, we are going to have Professor S.K. Kak with us, the former General Council member, NBA, former Vice Chancellor, Chaudhry Charan Singh University and MMTU, and presently member of 3 important national committees of AICTE, evaluation of education outcomes in which ministry and Stanford University are involved, one related to NEAT. So this is going to be a very important and interesting session with Professor S.K. Kak. So we have been listening to eminent personality in the same series. Today we are going to listen Professor S.K. Kak between 4:30 to 5:30. Tomorrow at 10:45, we are going to visit the UNESCO World Heritage Monument, Ellora Temple Caves, where we can see the largest single rock architecture in the world. So I hope you all are prepared and have taken permissions from your college, enroll your name for this tour. Of course, we are going to have this virtual tour, which will be covering module 4 of SIP. And now we are going to have, module 2, physical health and related activities with Dr. Sundar Raj and Dr. Sushila Murthy ji. And yesterday we have seen, Mr. Murthy. In fact, Mr. Murthy is a commander in Indian Air Force, and their daughter were also helped us to understand how to cleanse in the senses of our body. Still, people are yawning. Wake up. Then tomorrow, we are going to celebrate this SIP. We are following these sessions, practicing, listening. Yes, so for the past, 10 days, we are following the different modules of this eSIP, a sampler. And tomorrow, uh, between 2 p.m. to 5:30 p.m., each one of us will celebrate this student induction program. The chief guest of the celebration event is Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal ji.
So, Honorable Minister of Education, Government of India would bless celebration of eSIP tomorrow, and the celebration we are going to have between 2 to 5:30 p.m. And I'm sure that you must have informed about the celebration to your friends, family members, and the parents, relatives. So all of us, can join for this celebration through YouTube and Zoom channel, Hindi and English. Shashank have raised his hand. Shashank, namaste. Shashank, your microphone is on. So welcome our YouTube viewer. I know each one of you have a clarity that we are going to start our day with health, session on the health. And I can see that our YouTube viewers are already active and ready to participate throughout the day. Well, Yes, our YouTube viewer can also write in the chat box. We are observing your chat. We'll take your questions. We'll take your queries to Dr. Sundar Raji and Dr. Sushila Murthy ji. Ji Didi. yes, Sundaraj and Sushila Didi is yet to join. Hmm. Yeah. I'll make a call to them, Didi. Yes, Bhaiya, because You 20. can interact with our children. Yeah. Meanwhile, we can hear faculty is there that Jyoti Ranjan Murthy ji. So if you want to share something, please let us know about your opinion and ideas about program. Hello. Then we have a student. Anyone would like to share about the morning session which you had so far? There is one hand is raised of Nandan Sabapati. So you can unmute. Mic is there with you. Oh, mic we cannot see. Their mic is not provided to them. Am I audible? Can anyone tell me that I'm audible to all of you? You are audible. I will be just giving the mic to the student. Okay. Okay, okay. So please, I can see that my student is there, Miss R. Hima and Mr. Rakesh Singh Nayar. So if they want to share something about the session or reflect their own experience, we would like to welcome. Good morning, ma'am. Good morning, Hima. Good morning, ma'am. I'm very Good. interested to know about what we are going to do now. Mhm. I'm plenty interested, ma'am. Have a nice day, ma'am. Have a Thank you, ma'am. you, dear. Yes, great to have you here. Thank you, ma'am. Yeah. Then we can also
Sabapati, you want to say something, beta? Your hand is raised. Can you enable my video? Dr. Uh, Sundaraj Perumal here. we, Namaste, Namaste, Sundaraj ji. Namaste, sir. Yes. uh, Pandit ji, join. Yes, yes. Pandit ji, we can enable Yes, Sundaraj's video. yes, please. Okay, so Sundarajji here, and time is already 7:31. So we can start formally our session with welcoming to everyone. So once again, namaste, suprabhat, and a very good morning to all our students, participants, including teachers, faculty members who have joined for this morning session of eSIP organized by AICTE. I'm sure that we all have learned and experienced yesterday use till oil to detoxify our nose, ear, and in fact entire body, and how we can have the glowing skin, and many more understanding we had. So I would like to invite Dr. Sundar Raji for further discussion and understanding about the various, I would say, the use of ingredient available at home and how we can internally detoxify to ourselves. So thank you, sir. And once again, welcome to you and over to you. Further, I would like to, yes, Sushila Murthy is also there. Welcome her. Welcome, madam. And Kumar Swamiji is also welcome. So please, I would like to hand over mic to you and stage to you. Over to you, Sundar Raji. Thank you. So my screen is visible. Yes, it is visible. Great. So like yesterday really was a wonderful session. बहुत अच्छा था कल का session. हम भी बहुत enjoy किए हैं. Sushila and her whole family helped us see how we can do practically. And today also we will keep it practical. And I can say today's session, this morning session, can be the essence of entire health workshop which we have conducted till yesterday. कल तक हमने जो हिंदी और इंग्लिश में वर्कशॉप किया है उसका एसेंस आज हम देख पाएंगे कैसे प्रैक्टिकली not just the morning routine, the whole routine, whole day, how we can correct our daily schedule to achieve perfect. Yes, Sundar Raji. Though this can be a good way to implement and see results, quantifiable results. Like we can it's not just subjective, objectively also we can see that the result between implementing before and after that we can easily quantify. तो हम पूरा सब जितना भी हमने सीखा है उसको कैसे हमारे डेली दिनचर्या में लेकर आ सकते हैं और उसको कैसे हेल्थ को पाने के लिए उसको कैसे यूज कर सकते हैं ये आज हम पता करेंगे. और उसको मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताने के पहले थोड़ा कोर्स सिलेबस रह गया था उसको भी मैं कंप्लीट करके मैं जाऊंगा. वहां पे हम आपको एक अच्छा सा टूल देंगे, एक वंडरफुल टूल देंगे. वी विल गिव यू अ वंडरफुल टूल विच विल हेल्प यू track your own health, which will help you, which will remind you to follow all these things, and which will also help you see how your health has improved. This wonderful tool which we have developed, our holistic human health team has developed, you can use it. So I'm very excited to share this with you. Before that, I would like to say what we have covered till now. If you can see, this yellow part, the understanding part is over, and then we have this blue part which is more like practical part. So this practical part is something which we have completely covered almost. This nurturing and protection of the body, in the nurturing part, intake, routine, labor, exercise, asana, pranayam, meditation, everything we have covered till now. This protection part, clothing, footwear, shelter, I will just complete it within 10 to 15 minutes, and then I will go into the practical implementation. And of course, this returning back to harmony of health, the other blue part, today afternoon we will be covering this particular part in both Hindi and English sessions. I will be taking the Hindi session and Dr. Kumar Swami sir will take the English session. So
if you go into this protection part, we need protection for our own body. We need clothing, footwear, shelter, and many other things which will help us in utilizing our body in a right way. So, like I would like you to reflect upon certain simple questions. Already you are a part of this UHV, so I think it will be very easy for you to reflect upon these things. So what is your motive behind purchasing clothing and footwear? How much time you spend on finding the most comfortable and healthy clothing and footwear, and how much time you spend on deciding the best looking and the most fashionable clothing and footwear? So you can just reflect and you can just type in your responses. And what is the preference when you choose clothing and footwear, health or fashion? What do you expect from others when you wear exclusive and expensive clothing and footwear? Are you expecting respect? What do you get after wearing exclusive outfit? And you are wearing a outfit worth lakhs. Are you expecting respect out of it? And what are you getting? Respect or jealousy? And to how many people you are giving respect based on their outfit and not based on their behavior? Just reflect upon this. Just see what you are doing, whether you are respecting the other person based on their outfit or on their behavior. Do you agree that clothing, footwear, and housing is useful mainly to protect the body and not to earn respect from others? These are some questions. So, yeah, wonderful. So I am getting so many wonderful responses. Mainly protecting the body. Yeah, we all agree upon this because we all went through this wonderful session called Jivan Vidya, the universal human values, and we all agree that primary reason to select clothing and footwear is to protect our own body. So well, let us see whether it is protecting or not. So the amount and type of clothing is dependent upon the body's constitution, our own constitution, our physical stature, gender, as well as social and geographic conditions. There are so many things which we have to consider before choosing the right clothing and footwear. So clothes provide a barrier between skin and external environment and can insulate against cold or hot conditions. Sorry, I forgot about Hindi thing also. Like हमारे कपड़े जो हैं हमारे शरीर के रक्षण और पोषण रक्षण के लिए हम यूज कर रहे हैं, और हमारा शरीर का प्रकृति, हमारा फिजिकल स्टेचर और हमारा सोशल एंड ज्योग्राफिक कंडीशंस, ये सब कंसिडरेशंस के हिसाब से हमें चूज करना है. और further they can provide a hygienic barrier keeping infections and toxic materials away from our body. So हम सब जानते हैं कि ये क्लोथ्स भी एक हाइजेनिक बैरियर है, बाहर से इन्फेक्शन ना आ जाए. एक क्लॉथ को हम यहाँ भी रख रहे हैं मास्क, जिससे इन्फेक्शन अंदर ना आए. तो हम सीजन के हिसाब से ड्रेस चुनेंगे. जैसे हॉट सीजन्स में थिन क्लोथ्स मेड अप ऑफ कॉटन और सिल्क फैब्रिक, कॉटन और सिल्क के बने हुए फैब्रिक हम यूज करेंगे. बहुत ही थिन रहेगा तो हॉट सीजन्स में अच्छा रहेंगे ना. थिक क्लॉथ ऑफ वूल, स्किन और अदर वार्म क्लॉथ मटेरियल इन कोल्ड मंथ्स. So not just the type of clothes, उसके रंग भी, color of the cloth also varies in different seasons. Like as prescribed in our traditional literature, you can see that during this Shishira Rutu and Hemant Rutu, multicolored or reddish or print cloth is good, and it should be, the cloth should be thick, warm cloth made from silk or wool. And if you look at summer or rainy season, so during those seasons, during the summer season, you have to wear light clothing, and the light clothing avoids retention of heat in the body. And in our tradition, saffron color is good in summer season. That is what they have told. In Varsha season, this white clothing is also good. And clothing. So this again, we will send you in detail the scientific aspects behind this colors and the type of clothes in different seasons. We will send you a detailed document because we have less time. We will understand the hazards of, particularly choosing wrong clothing. So if you don't consider the effect of clothing and just हम fashion को ही mind में रखते हैं, तो क्या हो सकता है? बहुत जैसे नॉर्मली क्लोथिंग जो होता है कॉटन, वूल, लाइनन, सिल्क, ऐसे होते हैं ना. तो टेक्सटाइल फैब्रिक जो होता है ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकता है. So whatever clothes we are choosing, they can be natural or synthetic or a combination of two materials, both synthetic and natural. Generally natural फाइबर जो होता है ना, ये प्रोटीनेशियस होता है, सिल्क या ऊल. और कॉटन और लाइनन में सेल्यूलेज ज्यादा होता है. So in silk and wool, proteins are there more in content, and cotton and linen, cellulose is more.
एंड देन मैन मेड फाइबर्स जैसे रायन, एसीटेट, इसमें सेलुलोज पॉलीमर्स ज्यादा रहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर, फाइबर ग्लास, रबर, स्पैंडेक्स, ये सब बहुत सारे चीजें होते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो डेंजरस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। सो सम क्लोथिंग कैन कॉज डिसीजेस like synthetic fibers like rayon, acrylic, polyester, spandex, olefin. They contain toxic chemicals that pose serious health risks. एंड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बहुत सारे टॉक्सिक क्लोथिंग्स मिक्स कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड more than 8,000 synthetic chemicals we use to produce garments which we wear on our bodies. So health complications associated with skin contact with toxic chemicals in synthetic clothing, they include respiratory diseases, contact dermatitis, and not just simple contact dermatitis. It can range up to cancer also if we are not careful about choosing the right clothing. इतने सारे 8,000 से ज्यादा केमिकल्स रहते हैं सिंथेटिक क्लोथिंग में जो बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस, स्किन डिसीजेस से लेके कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। ये केमिकल्स को जब हम चूज करते हैं बहुत ही केयरफुली चूज करना चाहिए जो हम सिंथेटिक क्लोथिंग जब चूज कर रहे हैं। ये एक बात है, केमिकल्स मिक्सड हैं, ये बहुत सारे सिंथेटिक कलर्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ये एक बात है। दूसरा बात जो है फिटिंग का है, हमारा क्लोथ्स जो है कैसे फिट कर रहे हैं हमारे शरीर को। टाइट फिटिंग क्लोथ्स दे अफेक्ट आवर बॉडीली फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, दे मे कॉज फैटिग और they may also suppress the digestive strength. And pressure due to tight clothing has an adverse effect on our gastrointestinal activities. बहुत सारा टाइट क्लोथ पहनने से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, हम ज्यादा थक जा सकते हैं, हमारा भूख भी कम हो सकता है और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक्टिविटी जो होता है वो कम हो जा सकता है, हमारा इंटेस्टाइन्स का मोटिलिटी जो है वो भी कम हो सकता है। और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया है कि होल गट ट्रांसिट टाइम ऑफ ए मील हम खाते हैं तो जैसे वो ट्रैवल करता है पूरा गट में, वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो जाता है जब हम टाइट क्लोथिंग लेते हैं। बहुत स्लोली फूड विल ट्रैवल वेरी स्लोली व्हेन वी आर वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथिंग, एंड द एक्सक्रीशन आल्सो विल बी the removal of toxins, removal of feces from our gut will also be delayed because of tight clothing. So धीरे बहुत टाइट क्लोथिंग पहनने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है। और जो इलास्टिक बैंड्स होते हैं हमारे कपड़ों में, इलास्टिक बैंड्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जैसे अंडरवेयर और नाइट क्लोथिंग के इलास्टिक बैंड्स होते हैं, वो स्किन में इरिटेशन भी कर सकते हैं। और एक स्टडी हुआ है लड़कों में कि टाइट फिटिंग अंडरगारमेंट्स बहुत ज्यादा तक यूज करने से स्क्रोटल temperature, testicular temperature बढ़ जाता है। When your study among men suggested that wearing tight-fitting under trousers is associated with high scrotal and consequently testicular temperature. ये टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से सेमन क्वालिटी कम हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाता है, स्पर्म्स का जो डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन होता है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर से हमारा जो अगर एक डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा शरीर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर होता है इसलिए हमारा टेस्टिकल्स जो है बाहर है, लेकिन हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू वेयर वेरी टाइट फिटिंग अंडरगारमेंट्स दैट टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एटलीस्ट ड्यूरिंग नाइट टाइम यू हैव टू रिमूव देम एंड मेक इट फ्री। And there are some problems like if you are concealing too much, घूंघट पहन लेते हैं या बुर्का पहन लेते हैं तो सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है, तो बोन मसल वीकनेस भी हो जाता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो जाता है, ऐसा भी देखा है हमने। तो हमें कौन सा फैब्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, कितना फिटिंग चाहिए, कौन सा चाहिए, ये सब हमें बहुत ही केयरफुली चूज करना है, क्योंकि ये अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द काइंड ऑफ फैब्रिक मटेरियल फॉर daily use, special occasions. We have to choose carefully, particularly regarding our own body constitution. If you are having excess heat inside your body, you have to mostly use cotton clothing. If the body is like more cold inside, कफ नेचर है तो थोड़ा थिक और सिल्की थिंग्स भी चलेंगे। तो हमें चूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर ओन एक्टिविटी, the surroundings, the temperature of this particular season, everything matters, and we have to mainly choose natural fabric with minimized colors.
with natural colors. There are so many fabric manufacturing companies in Kerala where they are using herbal based colors, particularly some medicated colors, which will also make so much good things in our body. Like it can strengthen it can stimulate your skin. It will be very useful for our body if you are using such materials. If such things are available freely for everyone, that will be wonderful. And we will also give you the information about that. The other thing is footwear. This is also a major cause of concern, because human foot is a masterpiece of engineering and work of art, says Leonardo da Vinci. Okay, if you look clearly from a biomechanical point of view, foot is one of the least understood structures of human body. हम फुट को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हाईली redundant पार्ट है फुट. इसमें 26 स्केलेटल एलिमेंट्स रहते हैं, न्यूमरस लिगामेंट्स रहते हैं, टेंडॉन्स रहते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स रहते हैं. तो इनको ठीक से समझना और इसके लिए जो अच्छा फुटवेयर चाहिए उसको पहनना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फुट में बहुत सारे वेरियस वाइटल पॉइंट्स रहते हैं, और अगर कोई इंजरी हो जाता है फुट को तो फैटल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा डेलिकेट और वाइटल पॉइंट सोल में रहते हैं. तो सूटेबल फुटवेयर यूज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ, so normally we see that it is more of fashion, the choice is more of fashion and not protecting health. So if that happens, what can happen? We have to choose the footwear according to the shape of our foot, and there are so many other factors which we have to consider, I will tell you. But the biomechanical studies ये दिखाते हैं कि बहुत सारा high heeled shoes अगर हम यूज करते हैं तो lower extremity joint function में डिस्टर्बेंस होता है, पीक प्रेशर रेज हो जाता है 4 फुट में, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही मीडियल साइड में, अंदर के साइड में लोड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे बहुत सारे लोअर लिम्ब मस्कुलर एक्टिविटीज और चेंज इन एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे चीजें में चेंज हो जाता है और इसका इफेक्ट पूरा शरीर पे पड़ता है. Study done by KD, they suggest that barefoot walking, particularly in children, if you can make them walk on barefoot, that is very good for health. तो barefoot walking अच्छा है, लेकिन कैसे चूज करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये एक हमारे मन में रखना है कि हमारा फीट का साइज जो है वो चेंज करता रहता है. जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम सोचते हैं कि एक जगह हमारा लेंथ जो है 18 साल के बाद ये नहीं बढ़ेगा, ये पता है, लेकिन फीट का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है. तो हमें पीरियोडिकली चेक करना है कि हमारा फीट का साइज कितना है. और बेस्ट टाइम टू measure the feet size of a feet is end of the day. At the time feet is the size of the feet is largest. Most of us will have one foot which is larger than other, so we have to fit our shoe first into the larger foot and always try on both shoes before finalizing. This is very important. एक फुट लंबा हो सकता है तो उसको उसमें एक बार पहले शू पहन के देखे और उसके बाद चूज करें. तो हाँ, तो जैसे मेरा साइज 9 है, मेरा साइज 10 है, ऐसा फिक्स मत कीजिए. आप पहन के देखिए कंफर्टेबल है कि नहीं है. और शॉपकीपर बोलता है कि आप पहन लीजिए, थोड़ा दिन के बाद वो फिर फ्री हो जाएगा, ऐसा मत समझिए. आप जब खरीद रहे हैं उस टाइम पे कंफर्ट होना चाहिए, उस टाइम पे फ्री होना चाहिए. तो थोड़ा गैप होना चाहिए. तो एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर स्पेस बिटवीन योर लॉन्गेस्ट टो एंड द एंड ऑफ द शू, 1 सेंटीमीटर स्पेस को एंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमारे टोस के मूवमेंट के लिए इतना स्पेस होना चाहिए, बहुत ही स्लिम. और ये ऐसा शूज यूज करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम है. और when choosing shoes, the length, width and depth of shoes are important. So ball of the foot जो होता है, हमारा पीछे का बाल जो होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द सोल में कंफर्टेबली फिट हो वैसा शू या चप्पल खरीदना है. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो योर हील शुड फिट कंफर्टेबली इन द शू विद मिनिमम अमाउंट ऑफ स्लिपिंग. स्लिप भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ही टाइट भी नहीं होना चाहिए. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और हाँ, अपर पार्ट ऑफ द शू जो होता है उसका सॉफ्ट फ्लेक्सिबल नेचुरल मटेरियल, लेदर हो या ब्रीथेबल मैनमेड फैब्रिक हो, ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होता है. और लाइनिंग अंदर का जो होता है वो भी ब्रीथेबल मटेरियल हो.
ये भी बहुत ही अच्छा है। और सोल का जो अंदर इंसोल जो होता है वो अगर निकाल सकते हैं तो क्लीनिंग करने के लिए भी अच्छा है। और दूसरा पैडेड, कुछ कुछ कभी कभी हमारे फुट के प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्थोसिस अंदर रखना चाहते हैं तो इसको निकाल के ऑर्थोसिस रख सकते हैं, वैसा पैडिंग रख सकते हैं, इसके लिए भी अच्छा होना चाहिए। हील जो है वो ब्रॉड बेस होना चाहिए, पॉइंटेड हील होता है वो अच्छा नहीं होता है। और 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हील होता है तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होता है। और ज्यादा तक आप उस शूज को यूज कर रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हील होना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लो हील्ड शूज जो होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, सेफ रहते हैं। हाई हील्ड शूज में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो गुड फिटिंग शूज मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव शूज ऐसा मत समझिए, बहुत ही इनएक्सपेंसिव और इकोनॉमिकल शूज भी बहुत ही अच्छा फिटिंग दे सकते हैं। तो हम बहुत ही केयरफुली शूज को चूज करेंगे तो अच्छा होता है। तो कौन सा टास्क है, हम रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, लाइक नहीं तो वर्क के लिए, ना कैजुअल किचन में यूज के लिए, किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से हमें अच्छे से ये करना है। तो हमारा ऑक्यूपेशन ये सब भी मायने रखता है हमारे फुटवेयर को चूज करने में। हाँ हाँ, एक स्पेशलिस्ट होता है, उनका नाम है पोडियाट्रिस्ट। अगर किसी को कुछ एडियो में दर्द है, या कोई प्रॉब्लम है, पैरों में जलन हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक पोडियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं जो फुटवेयर में एक्सपर्ट है। ही कैन स्पेशली डिजाइन फुटवेयर विच विल बी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर हैविंग सम डायबिटीज और सम अदर फुट प्रॉब्लम्स, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। ही कैन डिजाइन ए स्पेशल फुटवेयर which will not be very expensive, but it will be a designer footwear which will help you आपके पैर के हिसाब से, आपके डिसीज के हिसाब से डिजाइन करके देने वाले फुट डॉक्टर बोल सकते हैं, पोडियाट्रिस्ट, उनको कंसल्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं, हाउसिंग जहां पे हम रहते हैं या ऑफिस होता है, वी गिव शेप टू आवर बिल्डिंग्स एंड दे इन टर्न शेप अस। विंस्टन चर्चिल ने ऐसा कहा है। तो शेल्टर जो है इसका भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व देते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर हमारे घर में, हमारा बेडरूम में, हमारा ऑफिस में, हमारा क्लासरूम में हम बैठते हैं, तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देने वाला ये घर या ऑफिस कभी कभी अगर ठीक से नहीं डिजाइन कर पाएंगे तो उसके अंदर रहने से भी नेचुरल हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर भी हो सकता है अगर हमारा घर का डिजाइन ठीक से नहीं होता है। तो ये पूरा डिजाइन जो होता है, पूरा डिजाइन जिसके वजह से, हाँ, जैसे बहुत ही स्लिपरी फ्लोर होता है, या बहुत ज्यादा प्लास्टिक अंदर यूज होता है, ठीक से वेंटिलेशन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं जिसके वजह से हमारा घर में रहने से या ऑफिस में रहने से भी डिसीजेस हो सकते हैं। और कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एब्सेंस ऑफ हॉट वाटर फॉर वॉशिंग, इनफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, इंट्रूजन बाय डिसीज वेक्टर्स जैसे इंसेक्ट्स और रैट्स, इनएडेक्वेट फूड स्टोरेज। बहुत सारे चीजें हैं हमारे घर में जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीजेस भी हो सकते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसे स्प्रेड हो रहे हैं। और हमारे पूर हाउसिंग कंडीशंस के वजह से बहुत सारे एलर्जेंस घर में रह सकते हैं, केमिकल्स रह सकते हैं, फिजिकल हजार्ड्स, थर्मल स्ट्रेस, बहुत सारा हीट अंदर हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस में ये गलतियां हो सकते हैं जिसकी वजह से डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे अनइंटेंशनल इंजुरीज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो सकता है हमारे घर के वजह से, ओवर क्राउडिंग हो सकता है, घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंडोर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, लेड पॉइजनिंग, एस्बेस्टोस पॉइजनिंग, एंड ऑफ कोर्स नेबरहुड इफेक्ट्स, बाकी के नेबरहुड कैसा है उसके वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रेनेज की वजह से या किसी और की वजह से। तो जब हम डिजाइन कर सकते हैं, हम घर बनाने वाले हैं तो बहुत सारे चीजें माइंड में रखना चाहिए। जैसे स्टेयर केसेस अनकंफर्टेबल है, कॉर्नर्स बहुत ही इनएक्सेसिबल है, रीच नहीं कर पाते हैं, शार्प एजेस हैं, वैसा फॉल्ट्स अगर ऑलरेडी हैं तो उनको भी करेक्ट करना है, कर सकते हैं हम। और फैशन और अपीयरेंस से ऊपर सेफ्टी जो है, सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, घर में गिर जाते हैं और इंजरी हो जाता है, या इम्प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से ठीक से ऑक्सीजन अंदर नहीं आता है, फ्लोर पे वाटर आ जाता है और गिर जाते हैं। ये वेंटिलेशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम पूरे हमारे खिड़कियों को बंद कर देते हैं और एसी ऑन रखते हैं तो ठीक से ऑक्सीजन अंदर नहीं आता है। अभी जो 5 स्टार रेटेड एसीज आते हैं या इन्वर्टर ऐसे आते हैं,
पावर को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर लेकर आने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। इफ यू हैव टू पंप आउट फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एसी टेक्स मोर पावर. So to minimize the current, to minimize the electricity bill, what they'll do is minimize the pumping of fresh air inside, which will be disastrous if you are sleeping for the whole night inside a bedroom in which all the windows are closed. You might say, if I open my windows, mosquitoes are coming, or the coolness of the AC is escaping. So you have to design in such a way that the atmosphere inside your bedroom should be comfortable. Still you get proper fresh air. That is very, very important. Of course, we have these air coolers which are much better than ACs, where you pump in air from outside continuously. So you will get fresh air if you use air coolers. And the only thing you have to consider is, many people say that if I keep the air cooler inside my bedroom, a lot of humidity is being generated. You should never keep an air cooler inside your bedroom. Air cooler should always be outside your bedroom, outside your window, and it should face the window, and through the window the air should be pumped from the air cooler. If you can design such a way, and then many air coolers in traditionally, instead of putting some normal honeycomb meshes, they put these meshes made out of the roots of वटीवेर के उशीरा के रूट्स को यूज करके एयर कूलर में रखते हैं, जिससे बहुत ही ठंडी और कूलिंग करने वाले हवा आता है। तो वैसा एयर कूलर अगर मिल जाता है, उसको घर के बाहर, खिड़की के बाहर रख के हम अंदर फ्रेश एयर पंप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसे यूज करेंगे तो भी आप खिड़की खुले रखिए, थोड़ा करंट वेस्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश एयर अंदर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइजीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइजनिंग, सफोकेशन, बर्न्स ये सब हो सकते हैं अगर हाइजीन हम ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बाहर से व्हीकल्स का साउंड्स वगैरह ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है। रोडेंट्स, कॉकरोचेस, मस्किटोस, हाउस फ्लाइज, इसका भी हम बहुत ही अच्छा प्रिवेंशन करें तो बहुत ही अच्छा है। और फर्नीचर, बहुत ही प्लास्टिक का फर्नीचर बनाए रखे, और वो समर की वजह से वो प्लास्टिक से पॉइजनस गैसेस आए, नहीं तो फाइबर पिल्लोज जिनके अंदर फाइबर होता है उनको फ्लेम रिटार्डेंट्स में डिपिंग करते हैं, बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनके ऊपर हमारे सर रख के हम सोते हैं, और ये एमिट करते हैं पॉइजनस गैसेस। हम पूरा रात वो गैसेस को अंदर लेते रहते हैं। लेड पॉइजनिंग होता है, एस्बेस्टस पॉइजनिंग होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो जो पिल्लोस हम यूज करेंगे वो नेचुरल कॉटन का पिल्लोस हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल जो फाइबर के पिल्लोस आ रहे हैं जिनको फ्लेम रिटार्डेंट्स में डिप करते हैं, उससे भी बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ज्यादातर वुडन फर्नीचर यूज करना, कॉटन बेडशीट्स यूज करना, कॉटन कर्टन्स, कॉटन मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मफुल पॉइजनस गैसेस अंदर नहीं आएंगे, अंदर जनरेट नहीं होंगे। और हमारा हेल्दी नाइबरहुड होता है, सराउंडिंग्स में भी नेचुरल बहुत सारे ट्रीज हैं, पोल्यूशन फ्री है, पीपल फ्रेंडली, केयरिंग है, तो फिजिकली और मेंटली भी हम बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारा वास्तुशास्त्र है, ये भी बहुत ही साइंटिफिक है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से पूरा एक सेशन लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी आर्किटेक्चरल इंजीनियर जो हैं, वो वास्तुशास्त्र में अच्छा ज्ञान संपादन करके उसका कौन सा रिलेशन है, किस डायरेक्शन में कौन सा रूम रहना चाहिए, कैसा एयर फ्लो आना चाहिए, कैसा सनलाइट अंदर आना चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च इंटीग्रेट करके हमारा घर बना रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर जो है एक मैग्नेट के जैसा है और अर्थ भी एक मैग्नेट का जैसा है। तो बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हमारा हेड नॉर्थ पोल है और हमारा पांव साउथ पोल है, क्योंकि हमारा शरीर में एंटायरली टाइनी मैग्नेटिक फील्ड्स रहते हैं, जो बिकॉज हमारा पूरा नर्व्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाते हैं थ्रू द नर्व्स। तो ये बहुत ही प्रभावशील हो सकता है अगर अच्छा डिजाइन कर पाएंगे, और बुरा डिजाइन से बहुत ही गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बहुत सारे साइंटिफिक थिंग्स हैं। और सन जो है, सन एमिट्स 2 टाइप्स ऑफ रेस, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेस। शरीर के ऊपर अच्छा इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक से हम ले पाएंगे, कभी कभी बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। तो कब किस टाइम पे सनलाइट हमारे शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए, किस टाइम पे सनलाइट खिड़की के अंदर से
घर में आना चाहिए, what is the best time to let the sun rays in and what is the best time to protect ourselves from the sun rays, that everything depends upon the design of the house. Because sun 24 hours is of the one solar cycle is divided into 8 parts. The sun is positioned in one of these 8 cardinal directions. So the room in which we sit in that particular period, we have to design in such a way that we will be either exposed to the sun or we will be protected from the sun. So there are some simple rules, like simple suggestions, guidelines, like meditation room in the northeast, bathrooms, doors and windows in the east direction, kitchen in the southeast, bedroom, office, south, storeroom in the south, master bedroom, wardrobes in southwest, children's bedroom, study room, toilets in west, second bedroom, dining room in northwest, safe and living room in north, and no water bodies in southwest. So there are so many other things which are debatable, but the important point is we need to integrate our traditional knowledge with modern architecture, modern scientific this thing, and we need to design a house in such a way that we get good air, good sunlight, and of course interiors also matter most. We have to give preference to cotton and natural things, for whether it is furniture or curtains or the bed sheets or whatever it is. So we have to design in such a way that our health is enriched by the place where we are living or working. This is very important. So now I'm talking about, I talked about this tool which we will give you to implement whatever we have discussed till now. This is very important. ये जो tool हम देने वाले हैं, इससे आप अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा टूल है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल टूल है. इसमें आप कुछ गोल सेट करेंगे और उनको आसानी से रीच हो जाएंगे. बट गोल सेट करना काफी नहीं है. गोल होगा फिर भी आप ठीक से उसको इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका सिस्टम गलत है, तो प्रॉब्लम हो सकता है. क्योंकि देखिए, एक एथलेटिक कंपटीशन में सबका गोल गोल्ड मेडल ही है, लेकिन कुछ लोग गोल्ड मेडल जीत पाते हैं, बहुत सारे लोग जीत नहीं पाते हैं. गोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स. अगर आपका सिस्टम ठीक है, आपका इंप्लीमेंट करने की तरीका ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होगा. तो जनरली हम एक ट्रेनिंग सेशन कराते हैं. बहुत सारे हमारे पेशेंट्स और जो हमारे वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब हमारे ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम एक कोचिंग एटमॉस्फेयर लेते हैं, हाथ पकड़ के उनको इसमें लेकर जाते हैं. लेकिन हाथ पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं. अगर ये कोचिंग सेशंस में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे आरोग्यदात्री का टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो info@arogyadatri.com को आप मेल भी कर सकते हैं. लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस किसी की चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद आपका कोच बन सकते हैं. कैसा करना है ये आपको हम बताएंगे. जैसे अगर आप हमारा पूरा वर्कशॉप देखे हैं तो हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए आपको, बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. कैसे उन प्रिंसिपल्स को लाइफ में इंप्लीमेंट करें उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. इन एग्जाम्पल्स को अगर हम हेल्थ टास्क में डिवाइड करें और हम डेली रूटीन में ऐड करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा. आप अगर देखेंगे तो जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उनमें से जो टेक अवे पॉइंट्स है वो ये हैं. जैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है. पहला एक चीज है कि हम हमारे शरीर को ऑब्जर्व करें. वी ऑब्जर्व आवर सेल्फ थ्रू आवर बॉडी थ्रू आवर सेल्फ. ये इनमें बहुत सारे टास्क हैं जो हमें रोज करना है. और सुन के हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना है. क्या ऑब्जर्व करना है सेल्फ को, सेल्फ क्या ऑब्जर्व करेगी. हाउ शुड वी ऑब्जर्व आवर बॉडी थ्रू आवर सेल्फ. वी शुड फर्स्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ पैटर्न ऑफ आवर लंग्स. व्हाट्स हैपनिंग इन आवर ब्रेथ पैटर्न, वेदर द ब्रेथ पैटर्न इज शैलो और डीप, वेदर द ब्रेथ पैटर्न is rhythmatic or arrhythmatic, whether we are taking the breath through nose or through the mouth, whether it is only breathing till here or till abdomen we are doing the diaphragmatic breathing, and whether there are any sounds which are coming while we are breathing in or breathing out or while we are sleeping. तो हमारा ब्रेथ पैटर्न को हम देखेंगे, शैलो ब्रीथिंग हो रहा है कि डीप ब्रीथिंग हो रहा है, रिथमेटिक हो रहा है कि एरिथमेटिक हो रहा है, और नाक से ले रहे हैं कि मुंह से ले रहे हैं, और उसमें कुछ साउंड्स हो रहे हैं क्या, एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहे हैं क्या, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है. ये कब करना है. ब्रेथ पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हमें ब्रेथ चेक ट्रिगर्स रखना चाहिए. ऐसे एक छोटा विजिटिंग कार्ड साइज का स्टिकर्स हम रखेंगे, इसके ऊपर ऑब्जर्व योर ब्रेथ ऐसा लिखेंगे और कहीं कहीं चिपकाएंगे, हमारा डेस्क के ऊपर, हमारा कार के ऊपर या बाइक के ऊपर, स्विच बोर्ड के ऊपर,
बहुत सारे जगह रखेंगे, जब भी वहां पे जाएंगे, किचन में जाएंगे तो देखेंगे, हो मेरा ब्रेथ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। बाइक शुरू करने वाले हैं तो देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइक राइड करने के टाइम पे हमारा ब्रेथ पैटर्न ठीक नहीं है, हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, बॉडी रिजिड हो गया है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। बाइक को या कार को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारा ब्रेथ पैटर्न को चेक करेंगे और देखेंगे। हम जब अगर हमारा ब्रेथ पैटर्न चेक करेंगे तो ये पता चल जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में हमारा ब्रेथ पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है। स्ट्रेस्ड आउट है तब अलग है, जैसे शैलो ब्रीथिंग है, रिलैक्स्ड है तो डीप ब्रीथिंग है। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम आवर breath pattern differs. When we are stressed out, when we are in anger, fear, irritation, shallow breathing happens. So we can switch off those feelings just by correcting the breath pattern. Just hold your breath for 30 seconds, then slowly you try to make it very slow, deep inhaling and deep exhaling. You can see that the switch happens. This anger, irritation, slowly it comes down when you alter the breath pattern. तो जब हम बहुत ही स्ट्रेस में हैं और शैलो ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग और एरिथमेटिक ब्रीदिंग हो रहा है, तो सांस को हम रोकेंगे, 30 सेकंड्स तक रोकेंगे, जितना हो सके उतना रोकेंगे, फिर देखेंगे कि डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन पॉसिबल होता है, और जब वो करते रहेंगे तो स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हम कॉन्शियस रहेंगे स्ट्रेस सेल्फ में क्या हो रहा है, और सेल्फ से बॉडी को देखते रहेंगे, हमारा हंगर कैसा है, हमारा थर्स्ट कैसा है। We have to observe when I am feeling hunger, when I am feeling thirsty, how is the strength of my body, and whether I'm feeling strong or weak, whether my joints and bones and muscles, they are flexible or rigid. Am I able to withstand strain? फिजिकल एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, स्ट्रेन को विथस्टैंड कर पा रहे हैं, मेरा जॉइंट वगैरह फ्लेक्सिबल है कि नहीं, स्ट्रांग फील कर रहा हूँ या वीक महसूस कर रहा हूँ, और टेम्परेचर में चेंज होने से बाहर का मेरा शरीर में रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं क्या, मैं विथस्टैंड कर पा रहा हूं कि नहीं टेम्परेचर का चेंजेस। सडनली मैं एसी थिएटर से बाहर आ गया, बाहर बहुत हॉट सन है, सडनली मुझे हेडेक आ रहा है क्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या। सो सडनली when I change from one temperature to other temperature, like coming out of a AC cinema theater and coming out in a hot sun, am I getting some headaches or some other problems? Or suddenly the season changes, weather changes, is there any problem? So we need to observe continuously, and we need to put these tasks in our tracker, in our tool, so that we do it regularly, we do not forget all these things. Like that, we need to observe ourselves through ourselves. So whether we are feeling enthusiastic or lethargic, how we are reacting when there is a lot of stress, are we facing the challenges or are we running away from challenges, are we feeling the having the feeling of prosperity or deprivation, are we feeling are we having the feeling of trust or fear, superiority or inferiority or equality. तो ये सब हमें देखना चाहिए हमारे सेल्फ को। जब हम देखेंगे, हमारा कल्पनाशीलता को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा अंदर जो फीलिंग्स होते हैं, ये अपोजिशन का फीलिंग हो रहा है कि रिलेशनशिप का फीलिंग हो रहा है दूसरे की तरफ से, हमारे अंदर क्या है, एंथुसियाज्म की लेथर्जी है, स्ट्रेस अगर हो रहा है तो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम भाग रहे हैं कि फेस कर रहे हैं, हमारे अंदर समृद्धि का भावना है या डिप्रावेशन का भावना है, हमारे अंदर विश्वास है या भय है, अभय है या भय है। हम जब किसी से मिलते हैं तो सुपीरियर फील करते हैं कि इंफीरियर फील करते हैं कि इक्वालिटी का फीलिंग रहता है। ये सब हमें ऑब्जर्व करना है और इसको ट्रैकर में रखना है। हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स को क्लेंस करना है, हमारा शरीर को क्लेंस करना है। इसके लिए कल जो हमने प्रैक्टिकली देखा है, किया है, उसको भी हमारे ट्रैकर में रखना है, हमारे टूल में रखना है। ओरल हाइजीन के लिए जो ब्रशिंग, टंग क्लीनिंग सेफ थिंग्स के साथ करेंगे, ऑयल पुलिंग करेंगे। नेजल हाइजीन के लिए नेजल ड्रॉप्स लगाएंगे या योगा में जल नेति, सूत्र नेति करेंगे। आई हाइजीन के लिए आई वॉश और आई एक्सरसाइजेस जो कल हमने दिखाया है वो करेंगे। ईयर हाइजीन के लिए ईयर ड्रॉप्स, ईयर मसाज। स्किन हाइजीन के लिए ऑयल मसाज, हर्बल बाथिंग पाउडर, ये सब जो कर रहे हैं, जिसके वजह से सारे सेंसेस से और अंदर शरीर के अंदर से भी स्वेट के जरिए बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल के आएंगे। ये सब चीजें हमारे टूल्स में हो और हम रोज करें, उसके लिए क्या करना है। और फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं शरीर के लिए, फिजिकल लेबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली वी हैव टू डू सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच विल मेक अस stay always active. Yesterday we came to know about this problems with physical inactivity. It is a fourth leading cause for death in entire world, physical inactivity. So कैसे हमारा फिजिकल एक्टिविटी डिजाइन करेंगे, हम क्या क्या काम करेंगे घर में,
हम थोड़ा हाथ बटाएंगे घर में, बर्तन धोने के लिए या कपड़ा धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए, बाहर जाके वेजिटेबल्स लेकर आने के लिए, ये सब में हम अगर थोड़ा हेल्प करेंगे, वी विल डू हेल्प इन household chores for our family members, or if we are staying in our own room, we will take good care of our own cleaning and other things. We will also plan some exercise routine which is more suitable for ourselves. And if you have kids and family members, you have to spend time, and if you can make it physically active, if you play some games and other things, even if people like grandfather and grandmother, we can also make them active by playing some nice games. ऐसा खेल कूद से भी हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, और घर में जो रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत सारा अफेक्शन बढ़ जाता है। और ये सब अगर सनलाइट में हो जाए, सुबह सुबह हो जाए, एक्सपोज भी हो जाता है शरीर सनलाइट के लिए, तो बहुत सारा हेल्प भी हो जाता है। सूर्य नमस्कार पर प्लान कर सकते हैं, योगासन प्लान कर सकते हैं, ये सब हमारा फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं। और सेल्फ को भी स्ट्रेंथन करने के लिए रेगुलरली हम जो प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साइलेंस या शून्य स्थिति का प्रैक्टिस करते हैं। साइलेंस कैसे प्रैक्टिस करना है? साइलेंस मतलब अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो साइलेंस नहीं है। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, इट इज नॉट साइलेंस। इफ यू आर क्लोजिंग योर आईज, स्टिल यू आर इन कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। सो मेनी थॉट्स आर कमिंग लाइक ए stream of river, so many thoughts are coming. We need to observe these thoughts, we need to observe the feeling behind these thoughts. हमें ये जो धारा प्रवाह जैसे थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है, डिटैच होके, एक ऑब्जर्वर जैसा हम जब ऑब्जर्व करेंगे। एक सिंपल सा एक्सरसाइज हम सिखाते हैं हमारे वर्कशॉप में, जैसे हमारे थॉट्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमेजिन योरसेल्फ एज अ टोल गेट कीपर, standing at the toll gate, and the thoughts are coming like vehicles. You are just checking the thoughts and letting them go. You are not attached. See, when we are watching this Kaun Banega Crorepati or something like that, then the person gets some 10 crores of prize money. You will not think about so many things like we will get the money in the he will get the money in the form of cash or check or DD or online transfer. Where will he invest the money, whether in real estate or share market or mutual fund? Who will be the nominee? You will not think all these things about him, because it is not your own life. Or someone dies in the show you are watching, you will not feel very bad, because you will not think about what happens to his wife, to his children, their studies, their marriage, is there any insurance, where are the documents. You will not worry about all those things, because you know that this is not your own life, and you know that it is not true also. But when it comes to your own life, very minutest thing like small pain in the neck or some small worry about your tomorrow's exam, everything will make us think so deeply. And in this thinking process, analysis process, we will strain like anything, and we will drain the energy like anything without doing any physical activity. So when you start observing these thoughts in a detached manner, without getting attached to it, what you can observe, you can just see. It's a small simple exercise we will start with. Of course, there are so many beautiful exercises in universal human values. If you can attend the morning meditation sessions conducted by Ganesh Bagaria ji, it will be next level. But initial level, just for a simple level, you can just observe. You are just imagine you are a toll gate keeper and at a mental toll gate, and thoughts are coming. Just observe and see that there are two kinds of thoughts: sad thoughts and happy thoughts. And again, two classifications: thoughts related to the things which have happened in the past, or things which happened in the which might happen in the future. So if we classify, only these classifications will be there. There are some miscellaneous here and there thoughts, like some sound is coming from outside or something like that, but mostly related to past or future, mostly related to good thoughts or bad thoughts. Just see in a detached way, just see the thought is good thought or bad thought, making you happy or unhappy, and past or future. Just observe past or future, happy or unhappy, let it go. Don't develop the thought. Next thought, past or future, happy or unhappy, past or future, happy and unhappy, go. Then the stream of thoughts, you will start observing there is a gap between one thought and another thought. This gap is silence, this gap is sunya sthiti. Now with your determination, with your sankalpa bala, you will be able to increase that gap. You will be able to experience longer periods of thoughtless state. That thoughtless state, if you can really experience, and if you can make it bigger and bigger, in that thoughtless state, lots and lots of good things will happen in your body and mind. Then you will be able to
take yourself to the next level. This also you can include in your daily practice. Non-judgment. Continuously we judge ourselves, we analyze, we judge. Why this happened to me, why this happened to me now, why is that other person speaking like this, is this his fault or my fault? Continuously we analyze, we judge ourselves, and we pass a judgment that this is the reason for this is for this happening. So if we can start practicing non-judgment for at least 1 hour a day. 1 hour I will not judge anything, I will not judge anyone, I will just accept whatever is happening. I will go with the flow, I will not sit idle, I will do whatever I have to do, but still I will not judge any person, I will not judge myself, I will not criticize myself, I will not judge others, I will not judge the events, I will not judge the weather, I will not judge the government, I will not judge anyone else or even myself. Just practice it for 1 hour daily. You'll see the difference, what happens in yourself. So being aware of what is happening continuously, being aware of ourselves, what thoughts are coming and what are the feelings behind it, whether I'm feeling opposition or I'm feeling the kind of relationship with others. So, and there are some spiritual practices, prayers related to your own customs, your own culture, your own area. All these things can be a part of strengthening ourselves. And of course, there is this wonderful topic of affirmations and visualizations, which takes entire session. I cannot explain right now. And then reading books, and reading great books, reading biographies of great people who have achieved wonderful things, and choosing personal goals and planning properly. Everything helps in strengthening ourselves. We'll see how we can include all these things in our own daily routine. ये सब self को strengthen करने के लिए हम जो spiritual practices कर सकते हैं, affirmations, visualizations, non-judgment, शून्य स्थिति, awareness, ये सारे चीजें हमारे हेल्थ ट्रैकर में, टूल में रख सकते हैं. और इंपॉर्टेंट और एक एक्टिविटी है हमारा बॉडी के लिए नरिशमेंट. हमारा शरीर को और मन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि कितना नरिशमेंट शरीर के लिए चाहिए. कब हमारा भूख लग रहा है, रेगुलरली लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, कौन सा चीज खाने से कैसा भूख लग रहा है. When I am eating some kind of food, my hunger is more, my hunger is less when I'm eating other kind of food. Am I feeling hungry in regular intervals of time? What about my thirst? What about other things in my body? We need to observe, and accordingly you have to plan the right food, eat it in the right time. Sitting Vajrasana after food is very good, and not hurrying after food, and not sleeping immediately after food. All these things we can plan. And ergonomics, this is the most important part. You spend a lot of time before the computer, and you are sitting in a chair, you are not moving, so you need to plan. Yesterday we have shown you this palming. Palming is wonderful to protect your eyes from this computer and access artificial light. You can see the video again how to do palming. Then spinal care, we have to make sure that our spinal cord is straight, and mostly we will bend like this while you are working on a computer. तो हम आगे झुक जाते हैं और spinal cord का ठीक देखभाल नहीं कर पाते हैं. तो every 45 minutes you have to correct your posture, you have to observe. So in the tracker also, if it reminds you to observe your eyes, observe your spinal, change your posture, observe the kind of ventilation you are having at the workplace, and a right way if you plan work, so that you will not be stable or sedentary continuously, you will be active also. So all these things can be included. And then there are some exercises which will strengthen our relationships and also improve our health, like activity with family members, playing and doing creative activities, sharing household responsibilities, discussing whole day activities, like after you come from college or office, sit with your family members, spend some time, discuss and plan together. Like you can plan the daily routine of entire family in which you will spend maximum time with your family members. And if you have kids, story time, all these things can be included. And of course, proper rest is very important to rejuvenate and revitalize your body. अच्छा सा rest भी लेना चाहिए. तो 9:30 को अगर हम लाइट्स बंद कर देंगे तो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है. वी कैन प्रोड्यूस मोर मेलेटोनिन इफ यू स्विच ऑफ द लाइट्स एट 9:30. प्रॉपर वेंटिलेशन इन बेडरूम, प्रॉपर रेगुलरली डूइंग फुट मसाज, हेड मसाज बिफोर स्लीप. Sleeping before 10 p.m. also helps us in proper utilization of the food we eat, and proper energy production, proper tissue building, rejuvenation, revitalization will happen if you can sleep before 10 o'clock. And you can practice meditation to induce sleep if you are finding difficulty. All these things we have included in this tracker. If you see this tracker, so like this is an example tracker. We will send this model tracker to you in a Word document or Excel sheet. You can design your own model tracker in which you will write all the dates, and then you have all the list of activities.
waking up early before sunrise, then observing your body through self, observing your breath pattern, drinking water before sunrise, brushing teeth with herbal tooth powder, tongue cleaning with mental tongue cleaner, eye wash with Trifla Kashayam or rose water or herbal kajal, oil pulling, oil massage, ear drops, nasal drops. But as I told you, yesterday we have demonstrated that this whole thing will take less than 5 minutes. This all the cleansing part will take less than 5 minutes. So maybe the tracker looks very huge, but if you start implementing, for example, I got up, I have attended morning meditation session by Ganesh Bagaria ji. Then I did my whole morning pranayam, including pranayam, meditation, everything. And then I've taken bath, did my puja and sitting before you before 7:30. So it is possible to do very quickly, and you will see that you will be able to utilize your time in a better way if you plan and if you have a tracker like this. See, physical labor, observing your breath pattern. See, observing your breath pattern, it comes several times in this tracker. So if you have observed, then you will tick it. If you woke up in before sunrise, you will tick it, or you can write the time when you woke up, and you can just tick things like every day. You can tick things. You can observe. You can do pranayama, dhyana, yogasana, surya namaskar. It is not mandatory to follow the same tracker. You can choose your own activities. You can make your own tracker. It is just an example. We have given you many examples, many guidelines. You can take some goals, some physical goals, some goals related to health, goals related to the health of your family, and further whatever tasks you need to put it in your tracker, you can just put them. Like we also have this observe your. So I will you have an idea about this tracker now. I will just show you the names. Waking before, observing body through self, observe breath pattern, water before sunrise, brushing teeth with herbal tooth powder, tongue cleaning with metal tongue cleaner, eye wash with fresh water, Trifla Kashayam, rose water, herbal kajal, oil pulling, oil massage, ear drops, nasal drops, physical labor, exercise, playing with kids and family members, exposing body to sunlight for 15 minutes, Surya Namaskar, Yogasanas, Pranayama, Dhyana, herbal powder body massage, bathing, spiritual practices, prayers, observing hunger and thirst, light breakfast with full focus, Vajrasana, sitting in Vajrasana after breakfast, working with full focus, eye care. Like this eye care and spinal care will come several times in the tracker, several times. So every time you do this eye care and spinal posture correction, you will tick. Okay. And observing body and mind before eating food. If the mind is disturbed just before having lunch, that is the heaviest part of the day, heaviest meal. So you have to do some deep breathing and meditation so that your mind remains very calm while you are eating food. Lunch before 1 p.m. and it should be heaviest meal with all nutrients. Relaxing after lunch for 15 minutes, not hurrying or not doing any hurry activity after lunch. And of course, in our coaching this thing, we ask them to send a snap of the tracker. Work for working people, other activities for people at home in the afternoon, drinking herbal tea or eating fruits in the evening, activity with family members, playing creative activities, spending time with family and entertainment, and writing a health journal. You can observe changes which you are experiencing because of this thing, and you can write it every day, a journal, and plan for the next day also. And brushing teeth at night, it's very important. Applying oil and feet to head, switching off lights by 9:30 p.m. If you have kids, you can tell some stories, or you can share your experiences with your spouse or friends. Observing your body before sleeping before 10 p.m., doing meditation. So all these things can be included, or you can choose some things. It's not like you have to include everything. You can choose some things, but believe me, when we made it mandatory for our participants to do all these things, they said by doing these things they are able to perform better, and they are able to concentrate better, focus better on their work, and they are getting things done much faster than what they were doing before. So इससे पहले जितना धीरे काम होता था, उससे जल्दी में बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि ये सब कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीइंग अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत जगह, बहुत बार आई केयर है, स्पाइनल केयर है, बहुत जगह ये दिख रहा है ना, इफ माय कर्सर इज विजिबल. सो बहुत जगह ऑब्जर्विंग माइंड एंड बॉडी है, ऑब्जर्विंग आवरसेल्फ है, बहुत जगह ये सारे चीजें हैं जो हम इंक्लूड करेंगे हमारे ट्रैकर में. और
आप अगर 1 महीने का ट्रैकर बनाएंगे या 15 डेज का ट्रैकर बनाएंगे, ये 14 डेज का 2 वीक्स का ट्रैकर है जहां पे जितना बॉक्सेस हैं, आप अगर देखेंगे पीछे देखेंगे आपको दिखाई देगा कि आप कितना कंसंट्रेशन कर पाए अपने हेल्थ के ऊपर, कितने चीजें कर पाए, आपने जो प्लान किया है आप पिछले 14 दिनों में या 15 दिनों में कितना कर पाए हैं, ये बहुत ही आसानी से आपको दिख पाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जैसे प्राणायाम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विथ वेरी वेरी स्मॉल माइन्यूट बेबी स्टेप्स। Okay, do pranayam for only 1 minute, do exercise for only 2 minutes, but still do it and tick it and track the progress. And if you miss one day it is okay, but don't miss 2 consecutive days. Try to make it regular, try to make the practice consistent. So if you can do it, if you can track your health, then like we have given you a questionnaire, हमने एक क्वेश्चनेयर दिया है ना आपको पहले आपके हेल्थ को एसेस करने के लिए। उस क्वेश्चनेयर को आप यूज करके आपका हेल्थ अभी एसेस कीजिए और कितना पॉइंट्स आ रहे हैं ये आप देखिए। और 2 वीक्स के बाद आप फिर से ये ट्रैकर पूरा यूज करने के बाद फिर से आपका हेल्थ को एसेस करिए, तो देखिए कि कितना पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यू विल डेफिनेटली सी a lot of improvement in your overall health. You can observe this, you can find it very very useful. We found it very useful. So many people who have used this tracker, they have given wonderful feedback. So you can see the feedback in our YouTube channel also, but you can use this and we can guide you. I hope we can have a database, and we will send this tracker to everyone. We will try to coordinate with AICTE people. For few students who are interested, we can even do the hand holding part and take them along with us, clearing their doubts and making a simple 14-day 2-week session, just to make the whole thing easy. And as a group, if we can do, it will be more enthusiastic. It will be like we can motivate each other and do somehow. Dr. Sundar Rajji. Yes. Questions, it seems to be important. Yes. If it is over, then can we quickly attend those questions? Over. Okay. It is over. Okay. So one question, it was asked from the chat box, that to minimize the back pain. Yeah. I'd like to take another question, which is just now the students have posted. Yes. They said that when should one immediately sit in Vajrasana immediately after the meal, and for how long it will be, it should be there? I mean, one should sit after the meal. Yeah, Vajrasana is something, only asana which you can do on full stomach. If you sit immediately after eating food, if you can sit in Vajrasana and relax, so it will help in better digestion. It will be wonderful if you can do that. And 1 minute or 2 minutes is enough. But initially, it might be difficult for you to do it for 2 minutes or 1 minute, 10 seconds or 20 seconds. You might feel pain in your feet. But asana is like, the longer you sit in the asana, the more comfortable you will become. So 2 minutes of Vajrasana after eating food is very good. And another question is there, asked by the student. Sir, is it true that spinal cord must be less exposed to cold? So we must rub our spinal side first after the bath? Spinal cord, backbone. Spinal cord. Yes, spinal cord. Yeah, exposing spinal cord to cold is like, so many muscles are there which might get contracted because of overexposure to cold. Yes, it is good. If you can rub your spinal cord backbone with hot oil or hot water, it will be very, very good. And hot things will relax the both backbone. And it is very good for strengthening our backbone. Yes. One question is coming that I feel that my mind is very weak. How to overcome it? Please help. Yeah, it's by continuous practice, becoming aware of yourself, what is happening in your thoughts, your feelings. Be aware of yourself, practice meditation, pranayam, non-judgment, and silence. All these things will help you make yourself very strong. Yeah. And of course that you have answered, but again question the student is asking that what sort of clothing should we wear during the gymming, fit clothes or loose clothes? Yeah, because while doing gym, this lots and lots of sweat comes. So cotton clothes are very good while doing the gym. Cotton t-shirt, cotton track pant is very, very good. Simple, very light clothes. And then another student is asking that, sir, I have heard if we do not do yoga in a proper way,
don't know what it means. It will adversely affect our body. Is it true? Yeah, yeah. Advanced yogasanas or advanced kinds of pranayam and other things need a proper guidance from a yoga teacher. But simple things like surya namaskar or simple asanas or basic levels of pranayam, you need not worry about it in a doing in a right way or a wrong way or right way. For example, surya namaskaras, everyone knows about it. There are lots and lots of videos showing us how to do. So simple level things, initial level it is okay. Advanced level you have to take guidance from a proper yoga practitioner. We have just 1 minute, so we can ask one question from take reflection or question from the student who has raised the hand. Can I call Mr. H. Arjun Vaishya? If mic can be given to him, he can ask the question. Yes, beta. Arjun, mic is with you. You can ask the question. Or Mr. Mukesh Kumar is there. Okay, so now time is almost over. Morning. Students, when to wake up and sleep, someone is asking. So best time is switch off the lights by 9:30, sleep before 10 and wake up early as possible. That will be the best time to read, best time to make your mind strong and creative practices. Everything is early morning time is the best time for students. Okay, sir. So this time given to us. Someone is asking the channel name, YouTube channel name. It is Dr. Sundaraj Telugu is there. Dr. Sundaraj English is also there, but we have to make more videos in it. In Dr. Sundaraj Telugu itself, lots and lots of English and Telugu videos are there. In YouTube, Devo City or Dr. SUNDR Sundar, RAJ Raj Telugu. So you can send them, sir. Okay. So Hello. thank you so much, sir. Now, Hello, sir. session will be continued after this in the evening, so the student can ask the question. Didi, Yes, Bhaiya. I think some student wants to ask something. His Acha, I microphone. could not hear it. Okay, so shall we allow them to ask? Yes, yes, Arjun. Hello, sir. Hello. Good morning, sir. I feel headache when some perfumes smell is getting to me. Yes. Yes, that is more of allergic reaction. Strong odors sometimes they might constrict the vessels which carry blood to your brain, and then you might feel headache. So you are more sensitive to such odors. Then the best way is to make yourself strong and less sensitive to such odors. Any atmosphere, any temperature, any kind of odors, anywhere you should be always be able to withstand yourself. For that, these health practices will definitely help. So that perfume problem is indicating that you are more sensitive. You should become more stronger by correcting your health pattern, health routine. Yeah, thank you Okay, very sir. much, Is Dr. there Sundarajji. any? Thank you. I am continuously Thank you, observing sir. and watching YouTube live also. So all the students and the faculty members, parents are appreciating the content and delivery on health. So thank you so much for being with us and thank you for guiding us in ensuring holistic health, Yes. particularly how to track our own health, Yes. footwears and clothes, every single information which you have shared with us is very useful. So thank you so much again. Thank you. Yes, Namaste. indeed. Thank you everyone for being here. So And with this, so, we come to Bhaiya, an shall end we of this. discuss the whole day program again? Yeah, so with this, we come to an end of this morning session. We have a 1 hour break and then 9:30 to uh, 10:30 and 10:45 to next 1 hour. We are going to have language proficiency. The first 9:30 to 10:30 parallel session, Hindi channel Sanskrit and English on the English channel. We will have language proficiency. Between 4:30 to 5:30 p.m. today, we are going to have talk from an eminent personality, Professor S.K. Kak, the former General Council member, NBA, and former Vice Chancellor, Chaudhary Charan Singh University and MMTU. So thank you so much for being with us in the morning session. We'll see you at